कुछ टिप्स देना चाहता हूँ एंड एक भी बोलूँगा जो कि एसएससी स्टेनो के लिए और काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं कि वहाँ पे पेन पेंसिल क्या अलाउ होगा क्या नहीं होगा और क्या चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। और जो लोग अभी स्टेनो में एक्सपर्ट नहीं है तो उनको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके सारे डाउट्स मैं अभी 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आपके और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मैटर कहाँ से आएगा? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मैटर देखिए, या तो आपका प्रोग्रेसिव से आएगा या फिर कोई प्रेसिडेंट स्पीच वगैरह जो है वहाँ से निकालेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं रहेगा, ठीक है। डी वालों का थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और रही बात पेन पेंसिल की, तो आपको पेंसिल लेके जानी एंड पेन वहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट वहाँ पे देंगे आपको, क्योंकि बाकी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए भी आपको पेन वहाँ पे चाहिए। हर चीज़ आप पेंसिल से नहीं कर सकते, आपको सिग्नेचर भी वहाँ पे करना पड़ेगा। सो पेन आपको देंगे और कॉपी भी वहीं पे देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि पेन वगैरह में आजकल लोग चिप लगा दे रहे हैं, ठीक है। सो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। जब आपके कान की बाली और हर एक चीज़ें जब उतरवा ली जाती है, सो पेन तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो विग लगा के जाते हैं, उसके अंदर जो है ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह पकड़ा गया था एक बार पेपर में। सो इन सब रीजंस को देखते हुए पेन को नहीं अलाउ किया गया है। और पेपर जिनका है उन सभी को पेपर देने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको स्टेनो आती हो, नहीं आती हो या आप थोड़ा बहुत जानते हो, आप जाइए पेपर दीजिए और देखिए कि वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। एक बार एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए तो अच्छी बात होगी नेक्स्ट टाइम। एंड लास्ट डेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैटर लिख के ट्रांसक्राइब कर सकते हैं उतना करिए। कॉपियाँ अपनी ज़रूर से चेक करिए और कोशिश करिए कि 1000 वर्ड्स लिखिए एंड उसको ट्रांसक्राइब करके चेक करिए लास्ट जो भी डेज आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं एक मैटर आपको बोल रहा हूँ, जो लोग भी देख लें, मैटर लिखेंगे एंड ट्रांसक्राइब करेंगे। रेडी, स्टार्ट। As you, Mr. President, have said in your address, there can be no economic progress in conditions of instability, uncertainty, and insecurity. Any attempt at bringing about a greater measure of economic equality will receive a setback in any such environment and in all situations in which law and order breaks down. It is the poorer sections of the society who suffer most than the affluent section. But I would like to draw your attention to one thing. Stability cannot be, should not be equated with the perpetuation of the status quo. Stability cannot be brought about if the present inequalities are allowed to remain or to grow. And unless we take note of the aspirations of the people,
and engineer change peacefully. We shall be overtaken by events and by far greater violence than you have seen today. Today, there is an atmosphere of restlessness in our country and also in every other country in the world and even in the most affluent of societies, as you may have noticed in the media, and countries that were quite until recently considered to be heavens of peace and prosperity do not seem to be quite so now. A new generation is coming up into prominence in all the countries whose attitudes and belief differ from those of the older generation in spheres of life. Therefore, whether it be politics or business and industry, we must take note of this new development and refashion our policies and programs so as to respond more readily to be the needs of the changing times. Your speech, Mr. President, clubs together the concentration of economic power and political power and considers both to be undesirable. Now, there are adequate safeguards in our political setup against the concentration of political power. Our federal system, with its allocation of powers as between the center and the states, is by itself a corrective against any trend towards the concentration of political power. We have now the phenomenon of different political parties holding power in different states. And in the national sphere, also, we have a powerful opposition subjecting every move of the government to the closest and most critical scrutiny. But businessmen should ask themselves frankly whether there are similar correctives against abuses flowing from the concentration of economic power. What action has been taken in our country to build up active organizations of shareholders, consumers, and small businessmen? In the absence of organizations of this nature exercising a countervailing influence against the concentration of economic power, government had to step in, whether it is the nationalization of banks or the monopolist legislation, which is now on the annual full stop. मैडम को ट्रांसलेट करेंगे एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करेंगे। और नई बैच जैसा कि स्टार्ट हो रही है 25 स्टेनो के लिए 20 अप्रैल से। सो जिनको भी अपना एनरोलमेंट कराना है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ उस पर आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को हमारी तरफ से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।